welcome Nazia on Telefilms. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you. It's great to be here. And firstly, I would like to congratulate you. आपका जो मूवी आने वाली है टिप्सी बहुत ही जल्द हम सभी के बीच में सिनेमाघरों में आ जाएगी. How much excited are you for the movie? I'm very excited. टिप्सी के रिलीज के लिए हम बहुत रुके. पोस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा रह गया हमारा. So there were times that हमने रिलीज डेट सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ VFX एंड सर्टन एडिटिंग इश्यूज हमारा डिले होता गया एंड फाइनली नाउ वी हियर 10th May को फिल्म इज गोइंग टू बी इन थिएटर्स and everybody is going to watch this journey that we started a year and a half ago. So I'm very happy, very excited, and fingers crossed, hoping for the best. The kind of character we have seen in the trailer, a very raw and rigid girl, Yeah. with a very bold look. Yeah. What do you want to say on that? Do you really like the character? Yeah, I mean, I've absolutely enjoyed playing Iris. She's very outspoken. I'm probably 50% in my personality, how Iris is. But that character is like she has no boundaries, she has no qualms. उसको प्ले करने के लिए मुझे काफ़ी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा. बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि बाहर जा रही है. जो दूसरे कैरेक्टर्स है जो लड़कियों के, दे आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर वेरी इंट्रोवर्टेड, एंड फॉर आइरिस कैरेक्टर टू स्टैंड आउट, आई न्यू आई हैड टू पुश हर टू द एक्सटेंट दैट कैरेक्टर गोज ऑन टू. तो there were times के challenging लगा also to play this character. I think we were just talking also about how I was getting into the skin of the character. It was मेरे काफ़ी tattoos थे उस कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली जो दीपक सर डिज़ाइन किए थे. तो काफ़ी वक्त लगता था मुझे टू गेट इनटू द कैरेक्टर. getting ready and being dressed for the character is 80% of the job done. The rest is the life that you give to your character. तो it was a fabulous and phenomenal journey. ऐसा किरदार मैंने पहली बार अपनाया है. I've played that चुलबुली लड़की, some that picturesque heroine in my past. इस टाइम पे कुछ और धमाकेदार करने के लिए मिला. तो it's been fabulous working for this character. And how was the association with Deepak Tijori? It's been great. Deepak sir is somebody that I met when I started initially foraying into films. There were a lot of times he had a certain script or a certain project that I met him for, लेकिन बात बनी नहीं. बहुत टाइम बाद मुझे उनकी पिक्चर में कास्ट होने मिला, एंड आई स्टार्टेड आउट विद अनदर फिल्म जो कंप्लीट नहीं हो पाई. लेकिन हाल ही में ही टिप्सी वॉज द प्रोजेक्ट ऑफ टिप्सी वॉज स्टार्टिंग, एंड मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मुझे तो स्क्रिप्ट भी नहीं पता थी और क्या रोल भी दे रहे वो भी नहीं पता था. मैंने बोला ऑफ कोर्स सर करूँगी, But you were on board at that time. Yeah, he said, darling, I have a new film. It's 5 लड़कियां हैं, उसमें से एक कैरेक्टर आपको दे रहे हैं. तो मैंने बोली जी सर बढ़िया, बिल्कुल दे दीजिए. क्या बात है. तो नेवर क्वेश्चन, नेवर आस्क्ड हिम कि मेरा क्या रोल होगा. मुझे पता भी नहीं था कि आइरिस वाज द रोल दैट ही वाज गिविंग टू मी. It's really good. It's really good. सो आई जस्ट जम्प्ड ऑन इट ब्लाइंडली, एंड तब का बात था. आज हम यहाँ बैठे And हैं. the rest is result we have in front of us. या Okay, मेरे को ना बहुत क्यूरियोसिटी है आपसे जानने की इस बात की कि what is your take on having a bold character और performing a bold looks, because जिस तरह का अभी किरदार में एक छोटी सी एक जो बोलते हैं झांकी देखने को मिलेगी. या जी. So what kind of mindset do you have while picking up those projects, because बहुत लोग उस टाइम पे चूजी भी हो जाते हैं. या दैट्स ट्रू. मेरा हमेशा जो एक इन माई हेड वेन एवर आई रीड अ न्यू कैरेक्टर, मैं हमेशा आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू टू डू. एक वो हो जाता है ना कि आप एक तरीके के रोल करते रहो, देन इट बिकम्स मैकेनिकल. आई फील फॉर मी पर्सनली एज एन एक्टर, I've done the picturesque heroine and the cute girl next door, and एक point आ जाता था as a creative person, as a performer, I get a little bored, and I want something that pushes me to the limit. Having said that, obviously when bold scenes and shows come to me, my मेरा नज़रिया जो है इस चीज़ को अप्रोच करना, इसमें हमेशा डायरेक्टर राइटर के साथ बैठ के पूछती हूँ कि हाउ आर यू ट्रीटिंग the scene or the character. I think there's a very fine line कि एक चीज़ होता है कि आप boldness टीवी पे दिखा रहे हो,
बहुत सारी जगहों पे मिसयूज भी हो जाती है, दे लाइक अच्छा दिस सेल्स, sex sells, so let's sell it. And there is something that the character demands it, the story demands it, and how the director is treating that scene, that is one of my main concern. But I'm always open to more stuff. I'm always wanting to push myself to further limit. I think as a performer you should never limit yourself to a certain character or to a certain role कि मुझे ये box ही check करना है. I think as a performer it's important to be open to everything, and I think that is what makes you an artist and a true actor, and that is all I'm always looking for. Really appreciate the way you respond. Thank बहुत you. ही बेहतरीन जवाब दिया आपने. Thank you. Also would like to know, like अभी जिस तरीके के trend चले आ रहे हैं from the past 2 years, it has been more notable. जितने भी बड़े बड़े directors and producers हैं industry के, there was a meme also posted on this Okay. कि the quality of the content is being degrading by time to time. Like for an example, Hira Mandi didn't get very good reviews. What's your take on Hira Mandi? Personally, I loved the show. I mean, Sanjay Leela Bansali is a phenomenal director. The music, the art that he's shown, जो quality है, storyline है. I think a lot of people did not watch, stick around to watch the episodes. क्या हो जाता है ना at this digital age, बहुत सारे ऐसे shows हैं जिसके episodes सिर्फ 20 minutes होते हैं. So I feel that somewhere down the line, because of all this extra content, people have become impatient. They don't want to sit and hold on to a story. अरे यार एक episode देख लिया, बोर हो गए, काटो. I have also gotten a lot of responses from people regarding Hira Mandi where they did not like it, and but when I stuck to all the episodes and watched all the entire show, I think it's phenomenal, the patience. Yes, there is a lot of content that बनता है which is completely boring, but what's great right now is that there is so much content that I mean it kind of caters to diverse audiences. ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि आप और हम बस बैठे हैं और हमें सिर्फ एक तरीके का सिनेमा पसंद आए. Okay, now you have OTTs and you have people who are watching shows and content over their phones, जो पहले की हमारी रीच नहीं थी इन सिनेमास, क्योंकि सिनेमास पिक्चरें सिनेमा घरों में आती थी. आपको मल्टीप्लेक्सेस आने के वजह से a lot of crowd used to go to single screens. I mean, everybody can't spend 500 rupees on a multiplex ticket, and if you go and see the numbers in just Mumbai alone, I think 60 to 70% of people go to single screens rather than going to a multiplex. So having said that, बहुत सारे कंटेंट ऐसा होता था जो पर्दे तक पहुंचती नहीं थी. When you're going towards a release, you need distributors, you need marketing, you need all of that. With OTT and smaller budgets, there is a space for small filmmakers to come with content. तो कुछ बड़ी अच्छी बन जाती है, कुछ नहीं बन जाती है, but again with the kind of population and the kind of people that are there to take that content, it's a very diverse field. They will like something and somebody else has not got something, and it caters to everybody, I think, by the end of the day. Completely agree. Okay, also I would like to know something from you, like how is been your experience in terms like the background you own, coming as in being a niece of Sanjay Dutt from Naldi's Dutt family. Yeah. So how much did it acted for you? Does it really help you in your career, or you get opposed for being, because most of the time it also happens when people got to know that it is a star kid is getting entered into the field. तो एक वो चीजें हो जाती है कि पहले से लोग जज कर लेते हैं, आर्ट के ऊपर एक पैरामीटर लग जाता है कहीं ना कहीं. आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? वो तो एक it's a fact. Of course, when you go on set and people know your background, they don't know my entire story. अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बैठ के उनको सुनाऊँ कि भैया मैं 2012 में मैं ऑडिशंस देती थी, मैं ट्रेन से टाउन से अंधेरी आती थी, रिक्शा पकड़ के I used to go to my auditions, which is something that I did. For me, I never walked into the industry thinking I'm Sanjay Dutt's niece. Yes, of course I am. That is just my family, and it's an honor to be related to such a renowned and celebrated actor.
and a phenomenal person at that. But my journey has been बहुत ही different and separated. I started from ground zero. I spent over a year and a half in just auditions, getting shortlisted, and somewhere down the line, I mean, a lot of people don't know a lot about my journey. There were times that I have done certain films that have not released, and शूट हो गया, मेहनत कर लिया, सब कुछ हो गया, and then ठन ठन गोपाल उसके बाद बैठे हैं दूसरे प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं. So all in all, I say it did not really help me, but at the same point of time, it didn't do any damage either. हाँ, एक परसेप्शन और एक जजमेंट हो जाता है. कोई कोई लोगों को लगता है कि इट्स एन ईगो थिंग, कि एक्टर का कोई क्या बोलते हैं, रिश्तेदार आया है, बीच में बहुत झंडे हो गए थे नेपोटिज्म 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 लेकर. मेरे वेर माई केस इज कंसर्न, देयर वाज नो नेपोटिज्म. मेरे को कोई किसी ने फ़ोन उठा के नहीं बोला कि भाई मेरी भतीजी को पिक्चर में काम करना है, उसको ले लो. ऐसा कभी नहीं हुआ है. ना ही मैं कभी अपने चाचा के पास गई हूँ बोलने के लिए कि मुझे एक्टर बनना है, आप मुझे बनाइए. मेरा जब when I started entering and pouring into films, my mother specifically, who's been a very big driving force and influence in my life, for पहले उनका नज़रिया था जी नहीं, आप पिक्चरें नहीं करेंगी, ठीक है. We have, I mean, she's seen the उतार and चढ़ाव in my chacha's life, and didn't want that for her only child. But जब मैं खड़ी हो गई बोलने के लिए कि I want to become an actor, so she's like, okay, fine. It's a lot of hard work, one. Secondly, I'm the only child, so obviously